Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying safe, and staying healthy. And hope you all are excited as well as charged up for yet another 14th. Uh, Even though there is nothing, fun about each of these 14s. Har 14 tareek aati hai. It brings back a lot of pain, a lot of anger, a lot of anxiety. बट एट द सेम टाइम अब वो मोमेंट आ चुके हैं इस पूरी फाइट के व्हेन वी हैव टू गैदर ऑल आवर एनर्जीज वी ऑल हैव टू गेट एवरीवन टुगेदर एंड एक बार फिर से सारी एजेंसीज को बताने का टाइम आ चुका है कि हम लोग ना तो सुशांत को भूले हैं ना हम ये भूले हैं कि किस तरह उसको मारा गया यस हाउ ही वाज ब्रूटली मर्डर्ड. And at the same time, we are all standing here to get justice for Sushant Singh Rajput, for his family. We need a closure for all his fans, including all the warriors. We need some kind of closure. क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमने बहुत इसके बारे में बैक टू बेसिक्स और बहुत सारी बातें करी हैं. अब it's time to move forward and take a little control, a little charge, and let's bring all of us, like all the warriors, together and speak for getting justice for Sushant Singh Rajput. Hello, everyone. Hello, Simira Manji. Hello, Carolyn. Hello, Bangla. Ben Dangla. And hello, Vishal Bhai. And hello, everyone who will be joining. आज ये वाला सेशन हो सकता है थोड़ा छोटा हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए बिकॉज इट्स बीन अ वाइल जब मैं लाइव आया था एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट विल बी. थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी से लाइव आएंगे थोड़ा कम लाइव आएंगे एंड ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन इट इज़ नीडेड बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव टू फाइट फॉर जस्टिस. वी विल कंटिन्यू दिस फाइट. More importantly, we need to fight for the family who's also fighting the bigger battle. आज बहुत अच्छा लगा मुझे बनारस के घाट पे the family was standing along with the warriors जो शुरुआत से इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं. आप लोग सेम बस लेकर आए. आप लोग सेम बस लेकर आए. कौन सी बस? आई डोंट नो. यहाँ आ गए. हेलो चिल. हेलो पैडी. हेलो सतीश जी. हेलो आयुष. हेलो फैमिली. हेलो. तो यस जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा आज लगा द महा अभियान जो आज शुरू हुआ है. बहुत अच्छा लगा मुझे. द फैमिली इज रोरिंग. द फैमिली इज ऑल चार्ज्ड अप एंड वो एक डिटर्मिनेशन जो मुझे उनकी फोटोग्राफ्स में दिखा जो उनके फेसेस पे था. Looks like there is something really big gonna happen. More power to them, more power to the family. And हम लोग जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ we are the mini warriors, we are the mini Sushants जो हम पीछे से हमेशा उनके साथ रहेंगे. आप लाइव हमेशा लंबा रहा है. आई नो आयुष भाई शुरुआत तो छोटे से ही होती है और उसके बाद लंबा हो जाता है. सो यस आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बट एनीवेज अभी मैं ज़्यादा टाइम और नहीं लेता इस चीज़ के लिए क्योंकि आज देयर इज़ अ सर्टेन एजेंडा. जैसे कि 14th आ रही है. 14th को देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान्ड अराउंड द वर्ल्ड. एक बार फिर से उसी के लिए मेरे साथ इस टाइम पे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु भाई जो हमारे साथ पहले भी जुड़े थे. वेलकम अगेन एंड हेलो हिमांशु. हेलो वरुण जी. हेलो जी. हियर इज गुड मॉर्निंग. आई गेस वहाँ पे गुड इवनिंग होगी. यस ऑलमोस्ट गुड नाइट. एंड द रीजन आप यहाँ पर हैं ऑब्वियसली बीइंग अ वॉरियर यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ अमेजिंग एक्टिविटीज. सुशांत के इस मूवमेंट में शुरुआत से मैं आपको देखता आया हूँ. मैं भी क्या बहुत सारे लोग देखते आए हैं. तो आज वी डेफिनेटली वुड लव टू नो व्हाट्स द प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर 14th. इससे पहले क्या आप बोले कैरोलिन? थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. NCB issued an internal report and connection with Riya Chakravarti that they can't find any evidence according. What about that? That was very, very disheartening to see the news reports and all that stuff. But we also have to understand one more thing, Carolyn. And I'll be very honest and very blunt on this session around this thing. सबसे पहली बात, the moment Sameer Wankhede moved out of NCB, things have definitely taken
a kind of a turn, which is not in the right direction, which is not good for us, all of us. Not to point direct fingers at certain people, but eventually we all know, who is who. I think एक पिछले session में we did talk about this as well. The new director, what has his affiliations been, किन किन के साथ affiliated हैं वो. Um, and it's not hidden. If you just do a Google search, you will be able to find his affiliations. So अभी ये जो game हो रही है, this has been very very heartbreaking to see for all of us. ये सिर्फ गेम्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में गेम्स हैं. पब्लिक में इस तरह की इंफॉर्मेशन जानबूझ के बार बार न्यूज़पेपर्स के थ्रू या मीडिया के थ्रू बाहर लाना, या लाना भी क्या, या बना के देना. बिकॉज एंड ऑफ द डे, एनी इन्वेस्टिगेशन दैट्स हैपनिंग, एनी अपडेट दैट्स हैपनिंग टू इवन द लीडरशिप या सीनियर लीडर्स को, या एनसीबी के अंदर भी, it cannot go out if there is nobody, if there is no like someone who is actually trying to leak that information, या पब्लिक सेंटिमेंट्स चेक करने के लिए अगर वो नहीं दे रहे, तो एंड ऑफ द डे देयर इज समबडी who is trying to throw this information or fake news outside. Exactly, Carolyn. Absolutely, 100%. That's my personal view. Again, I'm gonna be very clear about that. That my personal view says there is definitely something wrong. I was talking to somebody. मैं किसी से अकेले में भी यही बात कर रहा था, और मुझे इस चीज का बहुत डर है कि just because of the compromise, just because of few people, in the few wrong people in the right positions, this could go in any direction. But now I connect it to the spiritual aspect. We have seen this happen in this case and otherwise. Maharashtra का जो scenario हुआ है, uh, that it is very clear. Sushant, or his spiritual soul or his powers, is making a lot of things happen. Eventually, चाहे जो जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, his spiritual powers will eventually, take over and will get the justice for himself, for his family. तो मैं अभी भी उस spiritual belief पे, I am still stuck on that, and I will continue to believe in that. His energies, his power will definitely make the truth come out. चाहे जितने मर्जी चोर, जितने मर्जी ये करप्ट लोग आ जाएं इसके अंदर, I still believe he will be able to get his own justice, because he is the one who's fighting his own battle. We are just, very plain simple words में अगर कहूँ, uh, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह, we are just performing our tasks, whatever Sushant is asking us. So yes, as I saw Sameer Wankhede move out, I was not hoping कि इतनी जल्दी इतने सारे यू टर्न या चेंजेस कुछ दिखने लग जाएंगे. I was hoping it will take time, but looks like there has been a lot of nonsense happening behind our backs and behind us. And end of the day, आज जो सिस्टर्स की फोटोग्राफ देख के मुझे ऐसा लगा, again, this is my personal belief, uh, as if they're getting ready for a bigger fight, as if they're getting that the final push of energy. They're pumping that energy अपने अंदर, जिससे वो इस लड़ाई को अब head on लेने वाले हैं. And that's my gut feeling. That's how the feeling that I got when I saw that photograph. And अगर ऐसा है, तो मैं कहूँगा आप सबको भी कि आप सब लोग भी तैयार हो जाएं, because now the battle will begin any moment. This is gonna be like a world war for us. We will not let these culprits, बोलते हुए भी मुझे goosebumps हो रही हैं, but I'm telling you, I have that kind of feeling, that vibe. Sisters are not gonna leave. ये जो फालतू के ट्रोलर्स और जो टाइम पास करने लोग आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब पे, चाहे स्पेसेस में, जहां भी आते हैं, सबके लिए भी it's like a strong message. These sisters are gonna rip apart anybody who is going to stop, delay, or do anything wrong around this justice fight. So बिल्कुल पीहू, बिल्कुल सही कहा. इस टाइम पे जस्टिस तो लेकर रहेंगे.
अब ये कोई नहीं बचेगा. एंड यस, वी शुड नॉट बी बिलीविंग. लेट्स कंटिन्यू टू टॉक टू हिमांशु. हाँ जी हिमांशु, तो पहले तो इस के बारे में बात करते हैं जो 14th है. एंड आई एम गोना पुट समथिंग ऑन द स्क्रीन. व्हाई डोंट यू टॉक? Yes, thank you, Varunji. Thank you, everyone. Uh, I wanted to start with some. पहले पूरा डिटेल में मैं आपको सारी चीज बताऊंगा. So actually, the idea came from Vijina ji that we have done this activity last year. Last year, the same day, 14th April. At that time, it was 10 months to Sushant Singh Rajput's death and injustice to him. At that time, everywhere, Corona was on a peak, and most of each and every places जितने भी थे वहाँ पे लॉकडाउन सिचुएशन थी. मुंबई में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट लॉकडाउन था. But we wanted to do this activity because this is a very important day. Okay, everyone knows who is Dr. Bhimrao Ambedkar ji, who has brought the Constitution of India. He's a father इज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, भारत का जो संविधान है उन्होंने ये लिखा हुआ है, उसकी वजह से आज हमारी डेमोक्रेसी चल रही है. सो हियर व्हाई वी डिसाइडेड टू डू दिस एक्टिविटी इज दैट बिकॉज it is connected to our fundamental freedom right, and it is connected to justice. Okay, so highlighting this thing with Sushant Singh Rajput, it is very much important to know the world, and it is also kind of an awareness that what we are going to show the message to the authorities, to the people and the country and the world. Okay, and it is also will say that all the SSRians are also following the technical, legal, and all the kind of aspects to bring the justice. Okay, so it is not like idea came from one single person, but it is a coordination and collaboration of each and every SSRian in the whole movement. One has given an idea, then after every warrior have given their own suggestions in this thing. Okay, Dinesh ji hai, Chaitali ji hai, Dipali ji hai, फिर ट्रू कलर्स है, प्रोफेसर है, अशोक जी है, श्वेता जी है, आपने भी सजेशंस दिए, फिर शिल्पा जी ने सजेशन दिए, रुद्रबा जी ने सजेशन दिए, बहुत सारे वॉरियर्स है. मुझे जितने लोगों के नाम याद है, इसलिए आई अपोलोजाइज इफ आई फॉरगेट एनी नेम. सो if any of the warrior have given any suggestion, that count that you have also given your contribution to make this one of the successful one. Okay, so I wanted to start with that key, why we need to do this thing. Okay, and first thing I wanted to highlight here is that key in the history of Sushant Singh Rajput, this time we are doing globally and ground plus digital both ways. Last time we did only digital, but this time we are merging both the things. So here it is a benefit is that obviously if you go with this activity on ground, it is beneficial, more beneficial, because people across the nation will see this thing. जहाँ पे हम ये ग्राउंड में कर रहे हैं, जिस लोकेशन में कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी ये देखेंगे, और ये दोनों चीज जब मर्ज करेंगे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बिकॉज वी आर जस्ट शोविंग द राइट काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, एंड वी आर अवेयरिंग द पीपल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Right now, the situation is that the majority of the people do not know anything about the fundamental freedom right which is guaranteed to each and every citizen who is born in the India. Okay, born and brought up in the India. So it is guaranteed rights. So we are somewhere we are also awareing people. Understand why it is important. बेसिकली प्राइमरीली तो मैं ये कहूंगा कि ये 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए था. अगर ये सब्जेक्ट होता तो आज लोगों के अंदर वो अवेयरनेस होती कि उनको फंडामेंटल राइट्स जब उनको पता होते तो काफी सारी जगह पे हम इसका यूटिलाइज कर सकते. दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ टूल. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बेसिकली काइंड ऑफ अ टूल. और आई कैन से दैट इन हिंदू शास्त्र, जैसे
श्रीमद् भगवत गीता है जिसको हम पढ़ते हैं, उसको उसके अंदर जो हम जीसस मेंशन किए हुए, वी फॉलो दोस थिंग्स इन आवर लाइफ. It is also kind of a book, a holy book. You can say that in a constitution of India. If people know about this thing, then they will surely understand what is the importance of this. The important thing is that जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग टू आप फॉलो करके जाते हैं हम, ठीक है, तो नो ऑर्गेनाइजेशन, नो सत्ता कैन डिनाई दोज राइट्स. आप किताब लेके दिखाओ कि दिस इज द राइट which is guaranteed to me, and you cannot deny me to do this thing. No one will go against this thing. This is the power. ओके, कि आपको कोई ना लेटर लिखना पड़ेगा, ना कोई कंप्लेन करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सीधा ओपन करके आप दिखाओ ये चीज कि यस, दिस इज द राइट थिंग. ओके, सो बैक टू द टॉपिक. सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियली वी decided to go through the digital way, but still we kept a voluntary option to the people who wanted to do this thing on the ground. So where can people can do this on ground? So everyone, you all are listening, and if you feel that you can go on ground, then you can do it. How? In each and every city 90% चांसेस ये रहते हैं कि आम्बेडकर जी की स्टैच्यू होती ही है, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेस है हमारी सिस्टम का. ठीक है, जो बुक है जो उन्होंने लिखी है. सो जहाँ पे स्टैच्यू होती है, ठीक है, अब जाइए उनके उनके ऊपर माला अर्पित कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर उनको नमस्कार कीजिए, उनको थैंक यू कीजिए, एंड देन आफ्टर यू कम डाउन, एंड देन होल्ड द प्ले कार्ड पिक्चर एंड पोस्ट. उसको पिक्चर क्लिक कीजिए, पब्लिक को दिखाइए, यू स्टैंड देयर फॉर सम ड्यूरेशन. ओके, इसमें रॉरिंग नहीं करनी है. थिंग इज दैट दिस इज अ पीसफुल प्रेजेंस. According to Article 19, Para B, peacefully we can do a protest. So we need to highlight this point over there, that we can stand with the placard holding and showing the message with peacefully, right? That is a fundamental right. तो ये कर सकते हैं. Anybody is wanted to do this way, they can do it. Either they can stand with the holding a placard, और किसी को आप मोबाइल देके उनसे एक वीडियो भी मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं. In a louder way, आप you can say कि on this day Ambedkar जयंती, it is अम्बेडकर जी के बारे में आप कुछ पॉइंट्स आप बोल सकते हैं कि he is a father of nation, constitution, father of constitution, and he brought this book about the constitution, and our democracy is everything on it. Okay, so you can thank him about this. Then after, have a few words about Sushant Singh Rajput. Highlight 22 months of injustice to Sushant Singh Rajput and death of Sushant Singh Rajput. So people who is passing through, they will also understand that कि 22 महीने हो गए अभी तक इंसाफ नहीं मिला हुआ है. That is an important thing which is also important. People need to know about this thing. The very many things are connected with this thing. When people knew this thing कि that 22 महीने से इंसाफ नहीं मिला हुआ, तो they will also feel that कि अगर इसे एक होनहार इंसान को अगर 22 महीने तक जस्टिस नहीं मिलता है, तो what is the value of our common people? So they will also understand, and they might also join us. That is the thing. But if they don't join us, then they will also follow our path. Sorry. So many people like Valley Warriors, Kolkata 1, Kolkata 2, both teams are doing on ground, and it's a short notice. So क्या है कि पिछला कुछ 2 वीक पहले ही 27 तारीख को ग्लोबल प्रोटेस्ट हुई थी, एंड आई डू नॉट वांट पीपल टू मतलब बैक टू बैक एक ग्लोबल कैंपेन तक पुश किया जाए. सो मैंने ये चीज वॉलंटरी रखी है, कंपल्सन नहीं रखी हुई है कि एटलीस्ट आपको लगता है करना चाहिए तो मूव अहेड एंड डू इट ऑन ग्राउंड. इफ यू फील दैट कि नो, it is too early and we cannot, it is a short notice time frame, we cannot do, then there is another option through participate through digitally. Okay, so मैं ये जो पार्ट 2 है डिजिटल प्रोटेस्ट, वो थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा. सो पहले मैं हाईलाइट कर दूंगा कौन सी टीम है. दिल्ली से
दिल्ली वॉरियर्स है, दिल्ली दिल्ली में दो लोकेशंस है, दो दो सॉरी मैं, हाँ ओके, Dinesh ji and team has Dinesh ji, Dipali ji, True Colors ji and रचना जी। मैं उनको इनके इनको जानता हूँ, और बाकी सारे बहुत सारे वॉरियर्स हैं जो मतलब सीधा जाके ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करते हैं। दे नेवर कम इन फ्रंट एंड नो कम्युनिकेशन नथिंग। सो सारे वॉरियर्स जो है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट 4 लोकेशंस में वो लोग जाएंगे। दे विल गोना स्प्रेड द अवेयरनेस, दे आर गोना डू अ सुपर काइंड ऑफ एक्टिविटी। इसके लिए डिटेल में तो दिनेश जी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई माइट से दैट कि उन्होंने शायद सोचा होगा कि आई वांटेड टू कीप दिस सरप्राइज। ओके, सो ऑन द डे ऑफ 14th April, he will show with that thing, and the surprise is a very nice thing कि अगर सरप्राइज सरप्राइज रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो मुझे जितना पता है मूवी में आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट 4 लोकेशन है, वहां पे वो लोग ये प्रोटेस्ट एंड एक्टिविटीज करने वाले हैं इन द दिल्ली। ऑलमोस्ट 11 o'clock से उनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद उस हिसाब से वो लोगों ने अलाइन किया हुआ है। देन आफ्टर चैताली जी है, और कोलकाता में दूसरी टीम है, वो दोनों डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। आपके पास वरुण जी, आपके पास कोलकाता का भी एक पोस्टर इफ इन केस है तो दिल्ली, कोलकाता इन और इंदौर और बाकी जो पोस्टर्स है वो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता है हूँ मैं जितने मेरे मैं पास है। उन्हीं को अलाइन कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप बात कर रहे हो, मैं इस टाइम पे कोलकाता, दिल्ली के 2 हैं, और एक मेरे पास और था, वो था लखनऊ का शायद। हाँ, और लखनऊ का। लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन गाइस फॉर ऑल ऑफ यू, एंड हियर वी गो। दिल्ली में एक टीम है, वो कैंडल लाइट विजाइल करने वाले ऑलमोस्ट इवनिंग 4 o'clock से। ओके, सो दे दोस वॉरियर कैन जॉइन एंड एक्सप्लेन व्हाट इज इट, तो इट इज मोर बेटर इफ वहाँ के जो वॉरियर्स होते हैं वो भी ज्वाइन होके बता पाए चीजों को, तो ज्यादा या अच्छा रहता है। सो मैंने लिंक डाल दिया है, एनीबडी वांट्स टू जॉइन यू कैन। ओके, let me now share the screen. Okay, so here you have guys। मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको। तो जैसे कि आप देख रहे हो, दिल्ली में सुबह 11 से लेके 3 बजे तक वेरियस लोकेशंस पे होगा जो, वो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिनेश को, दीपाली को, रचना जी को। देन यू हैव 4 to 6 कैंडल लाइट विजिल जो आई थिंक जंतर मंतर पे है। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो एनी एनी दी, उनको जैसे बुलाते हैं सब लोग। देन यू हैव कोलकाता वॉरियर्स, आप ऑब्वियसली मेरलिन को, जॉय मोदक, कंचन जी, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हमारी लोन वॉरियर जिन्हें मैं कहता हूँ, लखनऊ अंबेडकर पार्क में हो रहा है, सुशीला जी, यू कैन देयर इज डेफिनेटली वन कांटेक्ट। मोर, इंदौर 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 से पीहू जी है, वो भी लॉन वॉरियर ही है। दे बोथ आर गोइंग ऑन ग्राउंड एंड दे आर गोइंग ऑन। इंदौर में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन हुआ था, तो सॉरी उनका बॉर्न हुआ था, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये इंदौर में अम्बेडकर अम्बेडकर नगरी के पास वहां पे लोकेशन है, वो पोस्टर में मेंशन की हुई है। तो पीहू जी जाएंगे। इंदौर इंदौर की पोस्टर में आपको शेयर करता हूँ, चेन्नई में भी है और लंदन में भी है, तो तीनों पोस्टर में आपको शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। श्योर। जस्ट तो गाइस, ये है सारे के सारे पोस्टर्स अभी के लिए जो मेरे पास थे, एंड ऑफ कोर्स आई कीप ऑन एडिंग। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो है ही है, साथ साथ वी विल आल्सो डू अनदर वन टुमारो। वरुण, इज दिस गोइंग टू बी सिमिलर टू 27th मार्च? यस, इसके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर तो है ही है, प्लस इसके अंदर और चीजें हो रही हैं, जैसे कि अभी हिमांशु बताएंगे हम सबको।
हिमांशु, यू वांट टॉक अबाउट द एक्टिविटी कि और हम क्या उसके अंदर कर सकते हैं? लेट मी प्लेस दैट बैनर हियर. Okay, so if you can all can see this now. All right, you want to talk about this also, Yes, Himanshu? yes. So they are going to do on ground. Okay, it is a short notice time, and I do not wanted to कि SSRians की खुद की लाइफ भी होती है, काम और सब कुछ चीजें होती है, और अभी रिसेंटली 27 को किया है, और इन ए शॉर्ट नोटिस फिर से ग्राउंड पे करना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, सो दिस टाइम ऑन अ ग्राउंड वी हैवंट अलाइन मोर सिटीज. सो अभी इतना सिटीज ही है, और मैं भी ग्राउंड पे जाके करने वाला हूँ, बट मैंने पोस्टर नहीं बनवाई है. और coming to this part 2, digital. So those warriors who cannot, this is a very important part, and I will take a few minutes to explain the importance and how we can participate in this thing. So this is a part 2, digital protest, and those warriors who wants to participate in this through digitally give their mark in this contribution on this day for Sushant justice. Okay, then the activities, two options of activities has been given. The first option is that print a play card. Print a play card, the first important, just print करना है. प्ले कार्ड दी हुई है. ओके, और मैं वरुण जी आपको प्ले कार्ड भी अंदर व्हाट्सएप में आई गेस तो है, ठीक है, हाँ, मेरे वो पास भी है. आप एक बार हाईलाइट कर सकते हैं. Sure. So print a play card, hold it, then click the picture and post that on Twitter. रिमेंबर दैट जो प्ले कार्ड रहेगी उसके नीचे वहां पे नेम इज एन ऑप्शनल. अगर आपको लगता है कि नेम लिखना है तो लिखिए, नेम नहीं लिखेंगे इट्स ओके. नीचे नेम, नीचे स्टेट और कंट्री का ऑप्शन है, वहां पे आपको आपकी जो स्टेट या कंट्री आपको मेंशन करनी है वो मेंशन करके होल्ड दैट थिंग. किसी को बोलिए पिक्चर क्लिक करने को, क्लिक दैट पिक्चर, पोस्ट इट ऑन ट्विटर. ट्विटर पे पोस्ट करने के बाद write your message about 2 months of injustice to Sushant Singh Rajput and death of Sushant Singh Rajput. Write your own words message. Important point is that here highlight the hashtag Ambedkar Jayanti. Only on the post of activity. सिर्फ activity की जो post रहेगी उसमें hashtag Ambedkar Jayanti use करना है. Okay, tag authorities and post it. Okay. This is a placard, and there is one more placard, the vertical one, different picture of Sushant Singh Rajput in the background also. Right. The second option is that a video making. Okay, तो इसमें same way hold the placard और वीडियो रिकॉर्ड करना है. आपको बोलना है, आपको जो मैसेज देना है, जो मैसेज बोलना है, वो मैसेज को रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है with the placard holded. In the same way, post on Twitter, use write a message on tweet पे and use the HT, tag authorities, Department of Justice, राष्ट्रपति, PMO, HMO, किरण जी, इन सबको आप टैग कीजिए, IPS नुपुर प्रसाद. Use the tagline and post it on Twitter. Okay. If anybody wants to do both the activities, they can. How? Okay, the activity time is starting from morning 7 o'clock. Okay, why 7 o'clock? Because previously we have seen that we have started the activity on 9 o'clock, because the 9 o'clock the tagline was released. तो मतलब 9 बजे, सुबह 9 बजे tagline release होता था पहले. The right now Priyanka Di is releasing the tagline, and she is releasing the tagline early in the morning. Okay, so tentative time we have taken a 7 o'clock. Why 7 o'clock? There is too much of a strategical reason behind posting on 7 o'clock. If we post our pictures between uh, 7 to 9, then it is high chances that when the tagline, when the HT of Dr. Baba Sahib Ambedkar was trending in that, when the people, general people, non-SSRians,
दे क्लिक ऑन द HT, वो क्लिक करेंगे, देखेंगे, तब हमारी जो टॉप की जो ब्रैकेट रहेगी उसमें हम SSRN की जो हमने जो ये डिजिटल वे में जो पार्टिसिपेशन की हुई है वो सारी टॉप पे दिखेगी. So they will also see and understand this thing that what we are doing, and we are spreading an awareness, and we will show a right kind of a message. How great to associate SSR. Okay, thank you, Satish ji. So sorry, one name I forgot. Avai. Avai has also contributed, suggesting, and he always present in the each and every spaces and in a coordination. Okay. Sorry, Abhay ji, I forgot your name. I apologize for that thing. So just मुझे याद आया क्योंकि उन्होंने यही ये सजेशन दी थी कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिविटीज की जाती है उसके अंदर ही डॉक्टर आम्बेडकर का जो HT है वो यूज करना है. ओके. सो आज आप ये यहाँ से प्ले कार्ड ले लीजिए और प्ले कार्ड लेके प्रिंट करा के चाहे तो वहीं पे जो जेरोक्स सेंटर में वहीं पे आप स्टैंड करके आप उनको बोल दीजिए कि भाई एक फोटो क्लिक कर दीजिए. ठीक है, वो फोटो क्लिक कर देंगे बिकॉज दिस इज इंडोर काइंड ऑफ डिजिटली कर रहे हैं हम. ठीक है, अब घर में आप करेंगे तो भी मतलब घर में भी हम अपने ब्रदर सिस्टर या फादर मदर किसी को बोल के करेंगे, वहां पे भी कर सकते हैं. इसका एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आज ही इसको प्रिंट करा के इसको आपने रेडी कर दिया तो आज शाम को आपको उसको ड्राफ्ट में सेव कर देना है. मैसेज है, ऑथोरिटीज है, ठीक है, और टैगलाइन है, HT है, वैसे करके ड्राफ्ट में आप इसको लगा के स्टोर कर दीजिए. सुबह जब 7 o'clock जब सिस्टर टैगलाइन रिलीज करते हैं तब सिर्फ आपको उसको ओपन करके उसमें टैगलाइन ऐड करना है और उसको सीधा ट्वीट करना है. सो अगर इम्पोर्टेंट टाइम इज 7 o'clock to 9 o'clock. 7 बजे से लेकर 9 बजे में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 20-25 लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, तो 9 बजे 10 बजे के बाद डॉक्टर आम्बेडकर जयंती का जो टैगलाइन रहेगा, HT रहेगा, वो ट्रेंड में रहेगा, टॉप ट्रेंड में रहेगा. तो जब लोग उसको क्लिक करके देखेंगे तो ऑथोरिटीज भी इस चीज का कंसर्न लेंगी. ठीक है, जनरल मासेस में भी लोग समझेंगे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो द मैसेज, एंड पीपल विल आल्सो नो दैट कि 22 months हो चुके हैं इस केस के अंदर एंड स्टिल सुशांत सिंह राजपूत जी को जस्टिस नहीं मिला. So this is an idea to highlight our point to the masses, to the world, because the world know डॉक्टर आम्बेडकर. पूरी दुनिया जानती है. लंदन में भी स्टैच्यू है उनका, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया उस दिन उनको याद करती है 14 अप्रैल को, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे. तो हमें अपना मार्क 7 to 9 के बीच में कर देना है. जितना मैक्सिमम मार्क करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमारी जो सबसे ज्यादा आर्टिस्ट होती है ना, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज्यादा आर्टिस्ट अगर किसी कैंपेन में होती है तो वो सुशांत सिंह राजपूत जी के कैंपेन में होती है. तो सुबह का जो पिक टाइम रहता है तब सभी के लोग अभी धीरे धीरे सब लोग सुबह एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं. पहले 9 बजे सब एक्टिव होते थे, अभी 7 o'clock धीमे धीमे पूरा सब एक्टिव हो गए. तो हमारे उसमें सबसे ज्यादा आर्टिस्ट होगी और हमारी जितने जो ट्वीट्स रहेगी वो टॉप ब्रैकेट में रहेगी. जब वो HT क्लिक किया अम्बेडकर जयंती का तब हमारी एकदम टॉप ब्रैकेट में रहेगी. आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक तो उस पर्टिकुलर आपकी ट्वीट का RT 100+ के ऊपर जा चुका है. और वो लोग भी जो नॉन एसेसारियन है, जो अम्बेडकर जी को फॉलो करते हैं, वो भी RT करेंगे. तो समझिए कि वो RT किया मतलब वो आपकी ट्वीट कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होगी. Understand? And they might be possible that they will also join us. Yeah. ये क्वेश्चन हिमांशु ऑब्वियसली अराउंड दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो सतीश जी ने भी वैसे क्वेश्चन पूछा था कि इसको यू नो इस तरह से कनेक्ट करना अम्बेडकर जयंती के साथ, विल इट बी द राइट थिंग टू डू, इज इट ओके टू डू इट, या इसका कोई फायदा या इसका कुछ नुकसान भी, या समथिंग व्हिच वी शुड नॉट हैव डन. Yes, मुझे पता था ऐसे ये सवाल जरूर लोग पूछेंगे. Yes, it is beneficial. What we are doing, we are demanding justice. Justice demand कर रहे हैं. So justice are fundamental freedom right, and we are highlighting the important point. इसके बहाने लोग डॉक्टर आम्बेडकर जी के बारे में जो किताब जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई उसकी हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं. आज हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता है.
99% people do not know any rights. If anybody knows all the fundamental rights of according to Article 19, if anyone know about what is the Article 14 and Article 21, so this 14th April as an Ambedkar Jayanti, people need to understand that it should be remembered as a global global on the global level and specifically nationally उसको एक अच्छे लेवल से हाईलाइट करना चाहिए बिकॉज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब लिखी है. why why the people of the nation and the authorities and the satta are not guiding people about कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्यों वो लोग अपने भाषण में ये नहीं बोलते हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो किताब है भारतीय संविधान के उसको पढ़िए, खुद भी पढ़िए, खुद भी जानिए और अपने बच्चे को भी सिखाए? क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपको राइट सारे पता चलेंगे तो सबसे पहले आप उन्हीं से सवाल करोगे. So this is the importance of the Constitution of India, and what we are highlighting, it is our fundamental freedom right. So on the day if we highlight this thing, then it will surely create an impact. There is nothing right. There is nothing wrong in this thing because according to Article 19A, freedom of speech and expression. So we need to understand. That's it. Perfect. So I think plain simple words में अगर बात करें guys, 14th को आप चाहे डिजिटली चाहे ग्राउंड पे कहीं पर भी हो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी एक्टिविटी करें ज़रूर. अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इस प्ले कार्ड का, वेरी वेल, इट्स रियली गुड. इफ यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट, दैट्स ऑल्सो फाइन. ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा स्पेसिफिक चीज़ों में ही करना है. जस्ट टेक a picture of yourself holding Sushant's photograph. Just do anything that can create awareness. Now, जहाँ तक मैं समझ पाया, हिमांशु ने वैसे जवाब तो दिया, पर मैं एक बार फिर भी इसको थोड़ा सा अपनी तरह से भी इसका जवाब दे देता हूँ. इन अ वरुण वे, जी, मुझे एक सॉरी एक एक पॉइंट में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? तो वो थोड़ा आपके लिए भी इजी रहेगा. ये एक पॉइंट में आपको हाईलाइट करना चाहिए. सोचिए कि आपको प्रिंट आउट करने की फिजिबिलिटी नहीं है, कोई हाँ ऑप्शन ही नहीं है, आप एक जगह पे स्टक हो गए, तो मैं आपको ये देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ. हाँ एक प्लेन पेपर रहता है, उसके ऊपर जो प्ले कार्ड आप देखिए उसमें जो जो चीज लिखी हो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस में ऐसे लिखिए कि वो हाईलाइट हो सके. yep, उसको लीजिए. सुशांत की फोटो है अगर पास तो भी ठीक है, नहीं है तो भी उसको होल्ड करके भी आप फोटो क्लिक के करके रख सकते हैं. right. यस. ओके वरुण जी, आप कंटिन्यू कीजिए. हाँ नहीं, बस मैं भी वही कह रहा था कि एंड ऑफ द डे इट रियली डजंट मैटर कि वो तरीका क्या है, किस किस कोलैटरल को आप यूज कर रहे हो, किस वीडियो को, किस पिक्चर को, किस प्ले कार्ड को. इट रियली डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि एवरी सिंगल हेड काउंट मैटर्स. एवरी सिंगल हेड काउंट हमें चाहिए, जो कहीं पर भी हो, चाहे आप छोटी सी किसी जगह पे हो, चाहे आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, चाहे आप किसी कंट्री और में हो. Just stand there with that play card or with that picture, or just take a picture. अगर आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, up to you. If you don't want to do that, just do a plain picture digitally. You can do that. अगर आपकी सिटी में कहीं पर भी भीमराव अंबेडकर का कोई भी स्टैचू, कोई भी इस तरह का जगह है, लैंडमार्क है, जहाँ पर आप चाहे, मैं ये तो कहता हूँ क्रॉस स्ट्रीट का नाम ही चाहे अंबेडकर स्ट्रीट हो या कुछ जगहों के ऐसे होते हैं, आप वहाँ खड़े होके भी अगर पिक्चर खींच के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ एक और चीज जो इन्होंने लिखी थी, क्लिक अ पिक, पोस्ट इट ऑन ट्विटर या किसी भी, मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया पे, बट यस ऑन ट्विटर. Tag the authorities की जहां तक बात आई, there are set of people who definitely should be tagged, चाहे वो पीएमओ, एचएमओ और आईपीएस नुपुर प्रसाद हो. उसके अलावा और कौन कौन से हैशटैग, सॉरी, और कौन कौन से होने चाहिए हिमांशु जी? राष्ट्रपति जी को टैग कर सकते हैं, पीएमओ, एचएमओ, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, या इनको टैग कर सकते हैं. बिल्कुल. और तो आप इन सबको टैग करें. और जो जो रीजन, जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ. आपको ये समझना चाहिए एक चीज, हु इज डॉक्टर अंबेडकर. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो एक बुक है जिसको एक एक
सोर्स ऑफ ट्रुथ कहा जाता है, जिसके बेसिस पे हमारी खुद की एक एग्जिस्टेंस है हमारी कंट्री में। उन्होंने बहुत सारे राइट्स के बारे में बात किया है, सारे राइट्स, प्रिविलेजेस, एक्सेस जो एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं वो बेस्ड ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन है। उस दिन, जिस दिन उनका बर्थडे है, ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर द एंटायर कंट्री, जब सारी कंट्री उनके बारे में बात करेगी। Fortunately for us, it has fallen on the 14th, where we also generally हर 14th को हम सुशांत को याद करते हैं, सुशांत के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इसको अपनी तरफ से एक सेल्फिश मोटिव की तरह लेके चलूँ मैं अगर, even though we have high regards and respect for Dr. Ambedkar, but at the same time हम यहाँ एक मूवमेंट के लिए भी आए हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस मूवमेंट है। और इफ देर इज समथिंग दैट फॉल्स ऑन दैट डे, वी शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट एवरी अदर डे एज वेल। जैसे अभी अभी मुझे पता चला, थैंक्स टू यश, 14th को इट इज तमिल न्यू ईयर एज वेल। सो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली कंबाइन दैट। 15th को बंगाली न्यू ईयर है। तो एवरी सिंगल रिलीजन, एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री शुड डेफिनेटली बी रिस्पेक्टेड। एट द सेम टाइम सुशांत के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो वी नीड एवरी सिंगल कम्युनिटी, एवरी सिंगल पर्सन। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उस दिन डॉक्टर अंबेडकर का बर्थडे भी है, वी शुड डेफिनेटली कनेक्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड स्प्रेड द वर्ड, बिकॉज इट विल ओनली हेल्प स्प्रेड इट लाइक अ वाइल्ड फायर। तो इसलिए डोंट डोंट लुक एट द अदर साइड और देयर इंटेंशंस। सही है कि गलत है, यस वी शुड डेफिनेटली इवैल्यूएट अ लिटिल बिट, बट एट द सेम टाइम every 14th we do it, and I'm like what RS is saying, very proud of all the ground warriors, क्योंकि हर 14 को या हर किसी ना किसी डिफरेंट डेट को, चाहे वो 17th हो, चाहे वो 21st हो, चाहे वो कोई भी रैंडम डेट भी क्यों ना हो, all of them get together, अपने सारे they bring their brains together, come up with ideas, come up with new fun and as well as creative ideas कि हम किस तरह से सुशांत का नाम इसको और वाइल्ड फायर की तरह आगे लेके जाएं और एजेंसीज को उठाएं जो कि पिछले 21 महीनों से सो रही है, 20-21 महीनों से, एंड 22 मंथ्स हो जाएंगे कल इस पूरे केस को, इस पूरे मर्डर को, और 22 मंथ्स में देर इज नथिंग। ऊपर से कुछ एजेंसीज उल्टा चलाने लगी हुई है अब, ट्राइंग टू वाइट वॉश द कल्प्रिट्स, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार सुशांत के जो वॉरियर्स हैं, दे आर नॉट लाइक गोना लीव इट टू देम। सो हम लोग भी अपनी तरह से करेंगे। More power to all of the ground warriors and the digital warriors. Before I let Himanshu speak, एक बार मैं फिर से सबको दिखा देना चाहता हूँ जिनको नहीं पता अभी तक, जो ट्विटर पे नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा कि क्या हुआ। ये जो आपके सामने विजुअल है, वैसे हालांकि मैंने इसका छोटा सा एक वो बनाया है, बट देयर आर कपल ऑफ पिक्चर्स that have been posted on Twitter. The entire family, मैं इसलिए entire बोलूंगा because these two sisters have been representing the family in this fight for justice. So Priyanka Di and Meetu Di have gone to Banaras, और वहां पर प्रशांत, the lone warrior, the first warrior जिसको मैं बोलता हूँ, he along with Nilotpal, along with Preeti Pandey, along with ममता काले, सब लोग मिलके एक महा अभियान की आज घोषणा करके आए हैं, शुरुआत करके आए हैं। आई एम रियली रियली श्योर। अगर आप कुछ कहना चाहते हो प्लीज हिमांशु भाई बोलो। This is really amazing. This is really wonderful things. This is kind of a big, shocking surprise for all of us. This is what I can say. It is really wonderful thing that this is. I wanted to highlight few points here. Is that कि लास्ट ईयर प्रशांत जी थी, उन्होंने ये कहा था जब 21 मार्च की, जब 21 सिटी में जब प्रोटेस्ट करने वाला था, प्रशांत जी ने ही कहा था कि हम लोग अम्बेडकर जयंती के दिन दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट जैसा किया जाए पीसफुल मैनर में। बट दैट टाइम द कोरोना सिचुएशन वाज ऑन हाई पिक टाइम एंड वी कुडंट डू इट। ओके, सो उन्हीं का जो आइडिया है वो मैंने पिक करके आई डिस्कस विद द रेबल एंड जीना एंड टीजे, इन लोगों के साथ डिस्कस किया था, दिनेश जी इन लोगों के साथ डिस्कस किया था। देन आफ्टर वी डिसाइडेड टू डू दिस थिंग इन अ डिजिटल मैनर। सो रेबल है, उन्होंने आर्टिकल्स की सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी थी और प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उन्होंने बनाए थे।
and then after we togetherly all the SSRians across the globe we have participated. And second point is that the कोलकाता चैताली उनका जो कोलकाता जो है, कोलकाता में दूसरी एक टीम भी है चैताली जी की, उनकी भी एक पोस्टर अभी आएगी कुछ देर में. They are going to do this activity with the permission they have taken, and they are going into marketplace in crowded places and spreading start they are going to do this activity and so start spreading an awareness. So one point, important point, is this is a very important point, I forgot to highlight this thing, that in just 2 days back in a space we have discussed about the QR code. Okay, everyone knows about what is a QR code. QR code is a code जिसको स्कैन करने से ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुशांत सिंह राजपूत केस के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है. Right. So right now many warriors are on the ground are distributing the pamphlets about the QR code. Many will post the stickers of about the सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस के रिलेटेड जो चीज का QR कोड है वो भी करने वाले हैं. जो फ्रीजमैन जी है उन्होंने, उनके पास इसके रिलेटेड पैम्पलेट्स काफी पड़े हुए थे, तो उन्होंने जितनी जितनी सिटीज में जिनको जिनको चाहिए था उन्होंने वो खुद उन खुद के पैसों से सब जगह पे उन्होंने वो चीज प्रिंट भी कराया ये चीज, और कुरियर भी किया हुआ है. सो togetherly everyone has decided to do some kind of a different kind of activity, so everyone is highlighting this thing. उन्होंने मुझे जब रुद्रपा जी ने बताया ये पॉइंट हाईलाइट किया कि उन्होंने एक कपड़े के ऊपर ये पूरा QR कोड ऐसा बनाया हुआ है और उसको छपवाया गया है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग उसको स्कैन करें. सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में क्या हो रहा है, उनकी डिटेल्स क्या है, जो आज तक मतलब जिस एंगल से एक्चुअली में देखनी चाहिए, ठीक है, वो लोगों तक नहीं पहुंची है जिस हिसाब से पहुंचनी चाहिए. जो इन्फॉर्मेशन, जो राइट इन्फॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है. सो एवरीवन इज गोइंग टू डू दिस थिंग. सो जितने भी एसएसआरियंस ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ. रश्मि रंजन साहू जी ने मुझे ये चीज बताई थी कि वो जॉब पे रहेंगे उस दिन, तो उन्होंने ये बताया था कि वो अपने कलीग्स और ऑफिस स्टाफ के बीच में ये बारकोड जो रहेंगे वो सर्कुलेट करेंगे, सबको बताएंगे इस चीज के बारे में. दैट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. और वहीं पे एक एसएसआरियन है बैंगलोर में, नंदिनी जिनका नाम है, और वो उस दिन सुशांत सिंह राजपूत जी का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पेंटिंग करने वाले हैं और इस तरह से वो डेडिकेट करने वाले ये डे. ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वरुण जी, थैंक यू एवरीवन. श्योर थैंक यू. मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा लैपटॉप, सो मैं फोन के साथ वापस आया हूँ. बट यस, एब्सोल्युटली आई थिंक वन थिंग व्हिच आई रियली वांट टू ऐड हियर इज, गाइस, मैं फिर से वही बोलूंगा. एक सेकंड, आई थिंक आई एम बैक ऑन माय डेस्कटॉप, सो लेट मी गो बैक. ओके, डजंट लुक लाइक. हाँ, तो मैं फिर वही इट्स एक बार ओके रिपीट कर. हाँ, RS proud Hindu ji, it's okay. People see here, many people will say these things, a party and get together. That's okay. It's okay. I believe that ki whoever is pulling us down, we need to think differently. We need to take that as a motivation. And if there is mistake, they try to highlight a certain mistake. So we need to सी कि अगर हमारी वहां से कोई गलती हुई है तो हमको उसको चेंज करना है और उसको हमें और अच्छे से और अग्रेसिवली मैनर में ऑन द इम्पैक्टफुल वे में करना है. ओके, सो आई ऑलवेज टेक सर्टेन थिंग्स पॉजिटिवली. ओके, सो मैं कहाँ से अटक गया था, मुझे आप एक बार हाईलाइट कर दीजिए. नहीं, आप नहीं अटके थे, मैं अटका था. मेरा सिस्टम अच्छा रिस्टार्ट हुआ अच्छा, था. आपका तो मुझे लगता है सबको क्लियर सुना है. मैं बीच में से डेफिनेटली निकल गया था और मैं फोन QR पे कोड आया के हूँ. ऊपर था. हाँ, चैताली जी QR कोड का जो पैम्पलेट्स वगैरह रहेगा वो हाईलाइट करने वाले हैं मार्केटेड प्लेसेस पे, एंड शी हैज टेकन अ परमिशन. एंड अम्बेडकर जी का जो स्टेच्यू रहेगा वहाँ पे भी वो पीसफुल वे में प्रेजेंस रखेंगे. एंड तो उनकी पोस्टर अभी रिलीज नहीं हुई, उनकी पोस्टर आएगी बिकॉज उनको परमिशन नहीं मिली थी, तो उन्होंने पोस्टर नहीं करवाई थी. सो ये है. और फ्रिजमैन जी है, उन्होंने ये
इसके जो बारकोड के जो जितने भी पैम्पलेट्स हो सके उन्होंने खुद के पैसों पे पूरा छपवाए हैं, और उन्होंने पिछली जितनी भी स्पीसीज हुई उन्होंने वो बताया कि जिन जिन लोगों को ये पैम्पलेट्स चाहिए, जस्ट गिव मी योर एड्रेस, आई विल जस्ट कुरियर यू। ओके, तो उन्होंने आई गेस तो दिल्ली वॉरियर्स को दिया है, और ये शायद एक दो और लोकेशंस को भी उन्होंने सेंड किया है। उन्होंने कपड़े के ऊपर ये बारकोड प्रिंट करा है। उन्होंने अभी यस्टरडे उन्होंने बताया कि उन्होंने स्टिकर्स भी प्रिंट करवाए हैं। तो स्टिकर्स एज मेनी प्लेसेस जहाँ पे जाके वो स्टिक कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन ये चीज बता सके। जो फैक्ट्स है, जो चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अभी तक नहीं पहुंची है, that is our responsibility, and so that we are doing this thing. And रुद्रबा जी है, उन्होंने काफी अच्छा इसके ऊपर वर्क करा हुआ है। एंड देयर इज वन मोर वॉरियर, आयशी जी, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है। सो राइट नाउ दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन डेवलपिंग समथिंग मोर। So one suggestion which I have give to him is that कि सुशांत सिंह राजपूत जी की लाइफ और उनकी जो भी अचीवमेंट्स और जो एक एज अ हमने जिस तरह से उनको जाना है उसके बारे में पूरा जो फैक्ट्स और जो डिटेल्स है उसकी भी उस क्यूआर कोड जो रहती है उसके अंदर जो ब्लॉग जो है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अपडेट की जाएगी, ताकि जब लोग जानेंगे उनको तभी वो समझ पाएंगे और ज्यादा केस में इंटरेस्ट ले पाएंगे। Yes, where Right. does the barcode lead to? Whose website? It is a blog जहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सारियंस है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स है, जो केसेस के रिलेटेड लूप होल्स है, जो डिटेल्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है। एवरीवन इज डूइंग दैट विद जजिंग समवन। बिल्कुल। इट्स ओके, मुझे ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है राजगोपाल जी। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी कोई लेक पुलिंग करता है या हमें कोई ट्रोल करता है, कुछ भी करता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें कोई गलती दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आई बिलीव दैट टेक दैट इज अ पॉजिटिव एंड बाउंस बैक विथ डबल एनर्जी। सो दैट्स And ओके। exactly. All right. So I think this was really very helpful, and thank you so much for doing this, Himanshu. I think a lot of clarity मिली है लोगों को, और अगर अभी भी लोगों को clarity नहीं है, if anybody has any more questions, there are quite a few of us जो ट्विटर पे भी हैं। आप इस सेशन के चैट में भी कमेंट लिख सकते हैं। आई विल बी रिव्यूइंग दोज कमेंट्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है किसी जगह के लिए, या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं उसके लिए भी, यू कैन डेफिनेटली लीव अ मैसेज एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी। अदरवाइज आपको पता ही है, हम सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ट्विटर पे, कुछ लोग फेसबुक पे, कुछ इंस्टा पे। हम में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्टली आपको जवाब नहीं दे सके तो we will definitely connect you with someone who will be able to help you with that plan. जैसे कि मैं पहले दिखा रहा था, let me just quickly show it for people who are not on Twitter, जिन्होंने अभी ये देखा नहीं होगा या जिनको पता नहीं होगा, let me just show you something. So this is the MahaAbhiyaan, जो कि the family has taken up, and बनारस की घाट पे उन्होंने पूजा भी की। उसके बाद आई एम श्योर they are definitely thinking of activities and things that can be done around this, and that's very very important now. और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि let's all get ready, let's all get our, वो कहते हैं ना, अस्त्र शस्त्र और सब कुछ इकट्ठा आप कर लें, because this is the time when we all have to get our hands, वो कहते हैं ना, get roll up your sleeves and get your hand dirty. Yes, this is the time now. अब हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े होना है with the family, and let's fight this out to get justice for Sushant at any cost. Simple as that. इसके अलावा मैं एक चीज और थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। देर इज ऑल्सो अनदर ट्रैक विच इज गोइंग ऑन। मैं अपनी ही ईमेल जो मैंने की थी, लेट मी जस्ट मेक इट दिस वे। ओके ओके,
ये हमने पहले भी किया था एक दिन, लास्ट टाइम, एंड लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू ऑल. I would have loved Shweta, yeah, Dipali, anybody to join, but that's fine. Let me try to share this. तो आई होप आप लोग पढ़ पा रहे हैं. नहीं पढ़ पा रहे तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. ये एक ईमेल है जो हम सबको भेजनी है. ये भी एक एक्टिविटी है जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे हमने शुरू किया थोड़ी देर पहले. वी वांट ऑल ऑफ यू टू सेंड एन ईमेल टू द पीएम एंड द होम मिनिस्ट्री. मैं पढ़ के बता देता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद आई ट्राई टू रिपीट इट इन हिंदी. Respected sir, as a citizen of this country, I feel responsible to raise my voice for any wrongs that I see in the system or the society at large. With due respect to the intelligence agencies of the country, I would like to bring to your notice the leaking of official and secretive investigative information by NCB. The link will be attached to the email. नाउ दिस लिंक जिसके बारे में बात हो रही है, ये वो लिंक है जो न्यूज़ आर्टिकल्स बेसिकली पब्लिश हुए हैं वेयर दे ट्राइंग टू वाइट वॉश रिया चक्रवर्ती. Sir, I have a concern as to why time and again such sensitive information is leaked to certain media houses by NCB, Delhi, which accounts for violation of the Official Secret Act and Conduct Rule. No other intelligence agencies like CBI or ED have ever heard of sharing leaking official information in the public domain. Why only NCB is witnessed to be leaking vigilance reports, whether it's in the Aryan Khan case or now case number 15 booked in 2020. All the nitty gritty of the case is released in the media by Mr. Ganeshwar Singh, SET head, who is a common link in both the cases. I am yet to understand why Mr. Singh is supporting Bollywood cabal so much that he doesn't think twice before sharing confidential information related to NCB cases to certain media houses and has no qualms in openly supporting Shah Rukh Khan, trying his best to prove Aryan Khan innocent, who was arrested in the Cordelia drug raid case. Further to this, I would also like to add Mr. Ganeshwar Singh is a close associate with Mr. Rajiv Shukla, INC leader, who in turn is closely related to actor Shah Rukh Khan. Is this why he is trying to prove Aryan Khan innocent with all his power and might? As a law abiding citizen of this country, I urge you to please take necessary strict actions against such acts, forming an investigation team to find the wrong being done by the SET head, Mr. Ganeshwar Singh, and try to curb such activities as this can influence the case and the charge sheet being filed around the Aryan Khan drug case in the next few days. I strongly urge that there should be a background check of SET head Sri Ganeshwar Singh because one person, the entire NCB team, is being seen in a bad light, which certainly is a matter of great concern that should be looked into. NCB has really worked brilliantly, and we would hold the Steam agency in the highest regard. So, Carolyn and two others who were actually initially questioning. Uh, sure, Himanshu Bhai, if you have to leave, thank you. Before you leave, you want to say something? Yes. I wanted to say that today we have decided to do at least 4 to 5 spaces and might be in an evening time frame. One or two lawyer will also join a space and they will also highlight very important points about the constitutional things as an awareness which is very much needed. तो अभी 12 बजे का एक स्पेस मैं कर रहा हूँ. देन आफ्टर आई गेस अभय जी है वो कुछ 2 बजे की स्पेस करेंगे. एंड देन आफ्टर इवनिंग में एक 5 बजे के अराउंड में एक स्पेस करूंगा. 7 o'clock के अराउंड जो स्पेस रहेगी वो शायद अभय जी करेंगे. और फिर राइट एंड में जो नाइट में जो 10 बजे का स्पेस रहेगा वो हम लोग सब लोग साथ में करेंगे. सो एवरीवन प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन इफ यू हैव एनी doubt or anything else, you come join the space. We are just highlighting these important points on this space. And if anything suggestions needed, then we togetherly follow those suggestions and will make sure that the 14th April will become a remarkable day for the Sushant Singh Rajput justice.
Thank you so much, everyone, for listening me. Thank you so much for your participation. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच हिमांशु. ऑलराइट. सो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था इस ईमेल की भी, ये ईमेल हमें भेजनी है नरेंद्र मोदी 1234@gmail.com, होम मिनिस्ट्री @hm@nic.in पे. एंड आप लोग भी ज़रूर करें. वी स्टैंड फॉर जस्टिस डॉट ऑर्ग पे इसका पिछला फॉर्मेट पड़ा है विच आई विल ट्राई टू अपडेट with the new format, but अभी के लिए that this the old version of this email is still there. So अगर आप लोग वहाँ से भी भेजना चाहते हैं, feel free to do that. But it is very important कि जिस तरह से एनसीबी इस टाइम पे पब्लिक मीडिया में फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव्स और फेक बातें करने लगा हुआ है, it is very important that we try to curb this and stop it and highlight it to our agencies. तो इसके लिए it is very important that we send this email as a mass email from all the warriors to stop such kind of nonsensical activity, specifically related to Mr. Ganeshwar Singh, who is a known kind of a person who is known to have affiliation with the Bollywood, very supportive of Bollywood, very supportive of Druggywood. हमने देखा है पहले भी बहुत बार ऐसा, जैसे कि परमवीर सिंह, चाहे वो जिस मर्जी कैडर के हों, still there was wrongdoing. So now we suspect, this is again a suspicion, that there is something going on by Mr. Ganeshwar Singh, and he should also be investigated before it again turns out to be the next Parambir Singh of this industry or whatever, NCB. All right, मैंने StreamYard का लिंक डाला है. अगर कोई आना चाहता है, if you want to share anything, you want to ask anything, talk anything, I will love to end this on a little early, जैसे मैंने कहा था. जाते जाते ऑब्वियसली एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर, especially to some of the trollers, some of the people who have been maligning not only the family of Sushant Singh Rajput, who have not only been maligning warriors, who have not only been maligning this entire movement, सबके लिए a common message that ignorance एक level तक अच्छी होती है. And I think few of us, including myself, we are ignoring few things, few activities, few statements, uh, just because you have some kind of a platform, चाहे वो ट्विटर स्पेसेस हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे वो आपके पास ट्विटर के हैंडल ही हो, उससे आप अगर कुछ भी गंदगी लिखेंगे, it will definitely not work well for you. Of course, we are ignoring for a valid reason, because हम unnecessary गंदगी हम नहीं मचाना चाहते. आप लोग तो मचा ही रहे हैं, but शोभा जी, this email, this format is already posted on Twitter. Otherwise, we stand for justice.org pay. There are buttons and you can send those. It is almost the similar format, thoda sa content change hai, and I'll try to update that content on the website. So it's we stand for justice.org. Wahan par golden button hai. Okay, going back to the message. Yes, we are deliberately ignoring, avoiding any kind of अनप्लेजेंटनेस, क्योंकि कुछ लोग हैं, चाहे वो किसी भी गैंग से हो, चाहे वो बेबड़ा गैंग हो, चाहे वो वट एवर गैंग हो, इट रियली डजेंट मैटर. All I'm trying to say and sending a message across is we're just ignoring, but ignoring एक टाइम तक चलती है. Ignorance एक लिमिट तक चलती है. उसके बाद if we have to, we will come back on you very strong, very hard, because end of the day, nobody can take any of the BS, any of the nonsense for a long time. uh, बहुत लोगों ने झूठ बोले हैं, झूठ बोल बोल के अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, अपने अपने हैंडल्स बड़े किए हैं. वीव ऑल सीन दैट. अब इस टाइम पे things have changed. Now people have realized and learned, हम सबसे गलतियां हुई हैं और हम सब ने एक्नॉलेज किया है. बट अब किसी को भी अब्यूज करना, किसी के बारे में अब्यूज करना, सिटिंग ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो
this is like the last and final warning for those people that you really need to stop doing your nonsense. अगर आप इस मूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, देन फाइंड समथिंग एल्स एंड मूव ऑन. सब लोग यहाँ पर बहुत बिजी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. एवरीबडी, I'm gonna assume, just like me, everybody has a full time job. एक full time job भी करते हैं और उसके साथ साथ घर भी देखते हैं. कुछ के बच्चे होंगे, कुछ के पेरेंट्स होंगे, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में और बिजी होंगे. सो हर किसी की लाइफ इज नॉट द सेम. एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स. बिना मतलब के चीख चिल्लाना, बिना मतलब के किसी को अब्यूज करना, बिना मतलब के किसी पे एलिगेशंस लगाना, दिस इज नॉट व्हाई वी केम हियर फॉर. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, call that person. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, then move on. There are so many people who are doing this. हर चीज को एक एक ढोल नगाड़ा बजा के हमें नहीं शोर मचाना. All we can do is we can also do it very very cool calm way में भी. So please, let's focus on the fight for justice for Sushant Singh Rajput, because that is why शायद हम आए थे. बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे निकल भी गए. कुछ ने छोड़ दिया, कुछ ने को छोड़ना पड़ा, कुछ को छुड़वा दिया गया, वट एवर यू कैन से. बट अगर कोई निकला है तो ऑब्वियसली ही और शी वॉज नेवर हेयर फॉर सुशांत. देयर वॉज डेफिनेटली समथिंग एल्स. तो जो अब रह गए हैं, उनको आप शांति से करने दें. नहीं तो द मोमेंट दीज पीपल गेट बैक और दे गिव इट बैक टू यू, you won't be able to bear it, and then फिर victim card शुरू हो जाते हैं सबके. So I just wanted to leave this because a lot of people have been asking me to do certain things, certain sessions or certain comments, and I'm not gonna do that. Because end of the day, वो कहते हैं ना, शायद इस चीज़ में भी आई हैव ग्रेजुएटेड इनफ, आई हैव ग्रोन. आज के बाद अगर अगर किसी ने किया, अगर ज़रूरत पड़ी, कोई अगर अपनी लिमिट क्रॉस करके निकला, तो येस, वी माइट हैव टू डू 1 or 2 सेशंस अराउंड दैट टू शो देम देयर फेस. बट आई एम ऑल्सो अवॉइडिंग, आई एम इग्नोरिंग दिस. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल. बट इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ, ये जो आप कुछ लोग अपने रिलेशंस और विद फैमिली, विद सर्टेन पीपल, उसके बारे में बोस्ट करते हैं, एंड ऑफ द डे अगर वो रिलेशन होगा तो आप उसके बारे में चुप ही होंगे. आप उसके बारे में शो ऑफ नहीं करेंगे दैट यू हैव अ रिलेशन विद XYZ. तो अगर आपका रिलेशन है, गुड फॉर यू, मेंटेन इट इफ यू कैन. बट मुझे नहीं लगता कि अगर रिलेशन होगा तो आप उसको शोर मचा के करेंगे कुछ. तो एंड ऑफ द डे, all I can say is you get a job. If you don't have a job, find a job. मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि यार मैं आपको जॉब दिला दूंगा, क्योंकि मेरे में उतनी कैपेसिटी नहीं है. बट वी कैन ऑल ट्राई. सो अगर इफ यू नीड समथिंग, सम हेल्प, मेंटल हेल्प, some kind of monetary help in the form of a job, please reach out करें. There are many good warriors, many capable warriors जो आपकी शायद हेल्प कर पाएंगे. Stop doing the bullshit that you're doing on different platforms. ये किसी को हेल्प नहीं कर रहा. Actually, it's putting you and your family to shame. And अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, please go ahead, continue doing or showing what your parents taught you when you were kids, because end of the day, I think that's how your body language comes out to be. जैसे आपके साथ हुआ होगा बचपन में, शायद वैसे ही आज आप behave कर रहे हैं on different platforms. So good for you if you're representing your family in that way, but let's try to at least not demean सुशांत. क्योंकि सुशांत के जितने भी वॉरियर्स हैं, जिन सबको सोशल मीडिया पे देखा जाता है, उनमें कुछ अगर 2-4 गिने चुने ऐसे लोग भी होंगे, तो ऑब्वियसली इट विल ब्रिंग अ बैड नेम टू सुशांत एंड दिस मूवमेंट. तो प्लीज़ आप खुद हट जाएं. खुद हटेंगे इन चीज़ों से तो अच्छा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू, इफ यू हैव द गट्स, टॉक अबाउट रिया चक्रवर्ती. Bash her up. If you have capacity, go bash up Sandeep Singh. If you have a capacity, bash up anybody you want to who is against this movement, who is a criminal, who has extorted money, who has killed people. Talk about those people.
stop talking about एक दूसरे के बारे में झूठे allegations लगाना. So this is the only message, and I see Simi Raman ji, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, तो let's end the session. Hello, Simi Raman ji, हेलो। and क्या कहना चाहेंगी आप, या गाना ही गाएंगी? गाना। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड. ये तो अपना पॉपुलर है हमारे सुशांत का, and I'll try to do it fast so we save time. No worries, आप take your time. अच्छा, It is your thing. I'm gonna make you full screen. थैंक यू. जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह. मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला. तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला. तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा. सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था. ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था. क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता. सीपियों के ओठ में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है इस तरह. मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा. अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा. तेरे सामने झुका है मेरे सर पे हाथ रख तेरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु है शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा. चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र भाग छाल का है खड़ाऊ पाँव में. प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में. दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया. समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, धुंध दोनों लोक में विशाल मृत पे था छिड़ा. अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु है शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा. जय Thank you so भगवान much. हमारे शंकर जी की. एंड SSR को जस्टिस मिलेगा, हम सब इकट्ठा मिलके लड़ेंगे. Absolutely. नमस्ते. Thank you. Take care. Good night. All right, guys. अब इसी बढ़िया से note पे I'm gonna end this session. Thank you so much. I hope the message went out well to everybody. Plus कल 14th को global roar फिर से है हर जगह से. जहाँ पर भी आप हैं, please take your pictures, get your play card ready, and spread the word for सुशांत सिंह राजपूत. और एक बार फिर से मैं ये स्क्रीन पे आप सबके रख देता हूँ, एक बार आप और देख लें. The family is also ready to take this to the next level. महाअभियान, जैसे जैसे हमें कुछ पता चलेगा आप सबको भी पता चलेगा. But at the same time, let's continue to support the family.
in this Mahabhiyan for SSR justice. थैंक यू हाँ जी सिमी जी आप कुछ कहना चाहते हैं अच्छा बाय कर रहे हैं ओके थैंक यू सो मच एवरीवन टेक केयर गुड नाइट एंड हैव अ फैंटास्टिक डे डोंट फॉरगेट टू जॉइन द स्पेसेस जो 14th के लिए हो रही हैं हर स्पेसेस पे जाएं एंड लेट्स कंटिन्यू द रोड फॉर सुशांत सिंह राजपूत थैंक यू सो मच टेक केयर गुड नाइट जय हिंद जय भारत